राइट सो आज का हमारा एजेंडा है फर्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल आज का क्वेश्चन, और फिर हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस, उनके वैल्यूज क्या है, कैसे डेवलप होते हैं, कैसे रिलेशनशिप्स कभी खराब भी हो जाते हैं, और कॉमन चीजें क्या हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करना है. ओके, सो आई एम प्रीटी श्योर almost all of you must have faced ये सब situation so far, so it's not a very challenging thing to relate to. Okay, so आज का question ये है, do you like to spend time with people whom you like, जिसे आप पसंद करते हैं, या आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो जो लोग आपको पसंद करते हैं. ओके, सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी एक फ्रेंड है, उसको आप सारा पसंद करते हो, बहुत पसंद करते हो, क्या आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो, या फिर ऐसे पर्सन से जो आप उसको जितना पसंद करते हैं उससे ज्यादा वो आपको पसंद करते हैं. ओके, सो दीज आर द टू सिनेरियोस, एंड इन दिस केस वी आर जस्ट टॉकिंग रिलेटिवली कि अगर आप उसको लेट्स से 80% पसंद करते हैं और वो आपको 90% पसंद करते हैं, मतलब वो आपको ज्यादा पसंद करते हैं. और अगर आप किसी को 80% पसंद कर रहे हो और वो आपको 60% पसंद कर रहा है, मीन्स आप उसको ज्यादा पसंद कर रहे हो. जस्ट अ रिलेटिव वे में हम बात कर रहे हैं. अगर ऐसे दो पर्सन्स है आपके पास, तो आप किसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहोगे और क्यों? ठीक है, तो एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है. लेट मी हैव सम आंसर्स. व्हाट अबाउट यू? Actually, the question is little complicated. I like to spend the time. I like to spend the time with both type of people. Oh, 50-50 you mean? One day with this friend, one day with other friend? Yeah, because we can't judge anyone. Right? Means like we can't. We should means we should be balanced. We should be on the both sides, right? Okay. Wow, what a wonderful answer. You seems to be a very balanced person. So that's a very good answer. Let me ask Tanmay. Hey Tanmay, dinner कर रहे हो क्या? Okay, I think he has some issues. Let me ask Lakshmikant. Yeah. Right. My answer for this question would be, I think I'll go with the 50-50 because The safest option. sometimes not the safest option, but sometimes it's like it's on us that we want to talk to someone, and sometimes like people try to, I mean, people come and talk to us. So at that moment, we just cannot come to one conclusion that it's like I'm at the position where people are liking me and I'm talking to them, or is it me who's talking to them? So for them, it's the same dilemma. For me, it's also the same dilemma. Okay, makes sense. Thank you. Okay, what about Devesh? मेरा टेंडेंसी भी ऐसे ही है कि 50-50 ऑप्शन चुनूं. All right. बट अगर जैसे ऑन जनरल बेसिस पूछे तो आई वुड से कि जिनको मैं पसंद करता हूँ मैं भी उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ मैं. Okay. लाइक 51-49 रहेगा. 51-49. Okay, very accurate percentages. All right. Tanmay, are you back? No. Okay. Oh, he's back. Am I audible? Yes, I can hear you. So I would like to stay with We lost you. Okay. Tanmay, we can't hear you now. Let's put it in the chat if you're having some issues with the audio. Shruti, can you try once? If not, just put it in the chat later. Okay, we can't hear you. That's fine. So just put it in the chat, guys, Tanmay and Shruti.
I would be just interested to know your opinions. Okay. And I see one Tulika is here. So Tulika, you want to answer this question? Yeah, sure. So basically, I like the kind of course I'm studying in right now. It made me realize that it's not necessarily for me to stay with the people that always like me, but I'm more of a kind of a person like if I like you, I will stay with you. Not necessarily, I don't care much if you like me or not. Okay. So it's more like 80-20. So Yeah. if you want to be in touch with Tulika, make sure she likes you. It's not just enough that you like her. That's a very, very valid point. That's the reality for a lot of people. Okay. So Shruti also says the same, will prefer spending time with people I like. Okay. If you ask my point of, this is a very, very general question. There is no right answer. There is no wrong answer. It's just who we are right now. और ऐसा है कि हम अभी क्या कर रहे हैं और किसके साथ पसंद रहना पसंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. इफ यू लुक एट मी, अगर मैं अपने आप की लाइफ भी देखता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी यही करता हूँ कि जिनको मैं पसंद कर रहा हूँ उसको उनके साथ रहूं. और ऐसे बहुत बार होता है कि मैं शायद उनको ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है. आई स्टिल ऑब्लाइज एंड आई मेक श्योर उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स फॉर मी, उनको भी शायद कुछ हैप्पीनेस मिले. एंड सेकेंड थिंग इज इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सच कंपनी. एंड मोर ओवर, अगर कोई आपको पसंद कर रहा है, स्लोली यू विल आल्सो डेवलप सम काइंड ऑफ लाइकिंग फॉर देम. So it's both the ways, but it's a very general question just for us to start thinking. Okay. So there are good people. There are people who says 50-50. That's a very, very good thing. Practically, as you see your life, if you're doing that, that is great. क्योंकि वो आपको बैलेंस देगा. बट ऐसे नहीं कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं है. आज का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे कैसे डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप्स आपके लाइफ में आएंगे और कैसे तरह तरह के लोगों से आप डील करोगे. ठीक है. राइट. So we starting at 11:15. Okay, first thing is this कि मैन जब बोलते सोशल एनिमल, उसको बहुत डिग्रेडेड तरह से बोल रहे हैं सोशल एनिमल. बट उसका पॉइंट ये है कि विदाउट हैविंग रिलेशनशिप्स हम अकेले से सरवाइव नहीं कर सकते हैं. इट्स लिटरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, या तो बोल सकते हैं जो योगी लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, शायद वो अकेले कहीं पे रहे, बट उनको भी खाना चाहिए, कुछ चाहिए तो बाकी लोग चाहिए. राइट. सिर्फ नेचर से रहना बहुत मुश्किल है. सो मैन फर्स्ट ऑफ ऑल कैन नॉट बी ऑन इट्स ओन. कितना भी आपको अकेलापन पसंद हो, थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है, but overall we need people, we need resources, we need a lot of things to survive. Okay. So we need a lot of relationships in our life. और हमको बहुत सारे relationships चाहिए जहाँ पे हम उनकी हेल्प लेके उनके साथ ग्रो करके then we live here, okay, on this planet. सो इट्स एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट कि हमारे पास जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, जितने भी तरह तरह के लोग हैं, उनको हम एक अच्छे से समझे. जितना अच्छा हम समझेंगे उतना अच्छा हम हमारा लाइफ यहाँ पे बिता सकते हैं. ओके. सो फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ रिलेशंस. लाइक मैंने बोला ये क्लास बहुत जनरल है, एक मैं जनरल पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ. सो फर्स्ट होता है रिलेशनशिप विद योरसेल्फ. इवन बिफोर हम बाहर जाएंगे, फर्स्ट होता है हम अपने आप से हम कैसे बात कर रहे हैं, अपने आप से हम कितने हार्मनी में हैं. अगर जो लोग अपने आप से बहुत ज्यादा हार्मनी में नहीं है, बहुत वो अपने आप से बहुत दुखी है या फिर अपसेट है, तो दूसरों से बहुत अच्छा रिलेशनशिप्स शायद नहीं बना पाए. ओके. तो फर्स्ट होता है कभी भी सेल्फ के साथ रिलेशनशिप एंड अदर इज विद अदर्स. ओके. एंड सेकेंड थिंग टू अंडरस्टैंड इज वी आर ऑलवेज इन रिलेशनशिप्स all our life, right? हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स रहेंगे, फैमिली रहेंगे, रिलेटिव्स रहेंगे, बहुत तरह तरह के नए रिलेशनशिप्स बनेंगे, बहुत तरह के नए लोगों से मिलेंगे. तो हम ऑलवेज नए नए रिलेशनशिप्स में, और हर आदमी एक यूनिक होता है. हर आदमी में कुछ कुछ तरह की अच्छी बातें होती हैं, कुछ कुछ तरह की बुरी बातें होती हैं.
बट इट्स अ पैकेज। सो हमारे पास अभी वो पैकेज से कैसे करना है अच्छे वे में वो हम देखेंगे। ओके। एंड ग्रेट रिलेशनशिप्स जो है जो बहुत हम देखते हैं कि 2-3 फ्रेंड्स ही होते हैं जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, बट ऐसे 2-3 फ्रेंड्स ही हमें बहुत सपोर्ट देते हैं, मेंटल सपोर्ट, हम उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं, वी कैन हैव गुड टाइम। बट अगर कोई रिलेशनशिप्स ही नहीं है और बहुत अकेला है तो बहुत जल्दी हम देखते हैं कि वैसे लोग डिप्रेस हो जाते हैं या फिर वो बहुत अकेला महसूस करते हैं। ओके। तो रिलेशनशिप्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, वो एक तरह से हमको नरिश करता है, हमको ग्रो करता है, एक तरह से हमको फुलफिल भी करता है, क्योंकि अकेला आदमी क्या क्या करेगा। इसके लिए एक फैमिली का एक सेटअप है ताकि आदमी अकेला नहीं रहे और वो सस्टेन करते हैं। बहुत बार होता है कि लाइफ में अगर बहुत अकेले अकेले रहते हैं तो बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों को बहुत डिप्रेस हो जाता है, छोटी छोटी चीजों पर काफी अकेलापन लगता है, हर काम खुद को करना पड़ता है। बट इफ यू हैव डिफरेंट पीपल हुम वी कैन गो टू, बहुत इजी होता है कि हम एक दूसरे से रिलेट करके अपनी लाइफ अच्छे से बनाए। ओके। एंड एक कॉमन ट्रेंड जो देखने में आता है वो ये है कि जो एक तरह से डिप्रेस्ड या अकेले लोग रहते हैं उनका बहुत नेगेटिव परसेप्शन है रिलेशनशिप्स के बारे में। एक बहुत तरह का नेगेटिव परसेप्शन है कि मेरे फ्रेंड्स नेगेटिव है, मेरे फैमिली नेगेटिव है, मेरे रिलेटिव्स नेगेटिव है या मेरे सिचुएशंस नेगेटिव है। तो अगर आपका पर्सपेक्टिव नेगेटिव है बाय एनी चांस, और इफ यू सी आउटसाइड आल्सो people who are depressed they have very negative perception, so we don't want to be in that scenario, और अगर है तो भी उससे बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बहुत एक कैजुअल वे में देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स हम जो कॉमनली देखते हैं। दिस इज नॉट अबाउट लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप्स और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स, वो तो उसके लिए तो 1 घंटा नहीं 1-2 महीने भी कम है। But this is more of how we deal with the family, with our relatives, friends के साथ, teachers के साथ या फिर अपने classmates या colleagues के साथ कैसे तरह तरह के relationships develop हो सकते हैं और उनका importance क्या है। okay? तो एक जनरल पैटर्न है कि ऑलमोस्ट रिलेशंस डेवलप करने के लिए एक एक तरह का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, and most of the times you can't skip the process, like directly strangers या best friends बनना बहुत मुश्किल है। You can have a connection but it takes time to develop a best friend. okay, so relationship develop बहुत एक simple process है। पहले 2 strangers रहेंगे और फिर introduce होंगे for let's say at any place anytime they'll get introduced, introduction होगा, फिर उसमें common points ढूंढेंगे, कहाँ common चीजें हैं, क्या क्या हम common कर रहे हैं। तो जैसे क्लास एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कि दोनों वही क्लास में, दैट्स हाउ यू नो देम। अगर वही 2 लोग रोड पे बाहर जा रहे हैं तो दे हैव नथिंग इन कॉमन, सो दे डोंट हैव एनीथिंग टू डिस्कस। ओके, सो देयर हैज टू बी सम कॉमन पॉइंट जहाँ से आप रिलेट कर पाओ, जहाँ से आप एक दूसरे को समझ पाओ, और अगर दोनों को एक दूसरे अच्छे लग रहे हैं then you move on and try to become a good friend, or you have more better rapport, and slowly you can move towards becoming best friends. So from good to best is a again एक journey रहता है, थोड़ा time लगता है, and you both understand each other, and then you become best friends, and then you can also go ahead and become a part of a family. So that's how some people, like, they get married, some people they treat their friends as the family. So that's how you can grow. This is a very common base template, almost सबको पता होगा कि ऐसे ऐसे हम डेवलप करते हैं। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि बहुत बार अगर हमें कोई पसंद है, ऐसा लगता है वो हमारे फ्रेंड्स बन सकते हैं, बट कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो बहुत लोग उसको वहीं छोड़ देते हैं। they don't go and approach them. Okay, why don't we know about each other? So that's a very tough thing to do. But if you really want like good friends, don't always rely कि आपके क्लास में ही सब आपको बेस्ट मिल जाएगा फ्रेंड, या फिर आपको बहुत बार देखते हैं कि टोटली अनरिलेटेड जगह से बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, टोटली रैंडमली बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। okay, because you go and approach, somebody has to approach, either the friend person approach or you approach, or the situation demands you both to converse, something needs to trigger कि 2 लोग बात कर पाए। okay, और हर रिलेशनशिप्स में कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे नंबर 1 चीज इज ट्रस्ट।
we need trust in relationships, because अगर भरोसा ही नहीं है एक दूसरे पे तो वो relationship ज़्यादा चलेगा ही नहीं, ठीक है? That's the number one thing. And then there has to be certain amount of respect in relationships, certain amount of love in relationships, and there has to be some attachment. Attachment meaning you have to be a kind of it's not like a negative word, but attachment means you need to be concerned about that person. एक थोड़ा केयर चाहिए रिलेशनशिप में. अगर एक दूसरे के बारे में कुछ ज्यादा फिक्र ही नहीं है या ज्यादा आपको लगाव ही नहीं है, तो फिर वो रिलेशनशिप ज्यादा टाइम नहीं टिकेगा. तो ये सब चीजें चाहिए कोई भी एक रिलेशनशिप में, कोई भी. एंड देयर आल्सो नीड्स टू बी सम कंपैशन. कंपैशन मीनिंग बहुत बार ऐसे नहीं है कि हर कोई हर बार परफेक्ट रहेगा. तो जब गलतियां होगी, जब चीजें सही नहीं रहेगी, यू नीड टू हैव लिटिल कंपैशन एंड लेट इट गो कि इट्स ऑल राइट. आपने कुछ ऐसे हो गया, वैसे हो गया, इट्स ऑल राइट. यू discuss it out and then you move ahead. Okay, so these are some of the common traits. And how does relationships go sour? Means relationships अच्छे से बुरे कैसे होते हैं उसका भी एक प्रोसेस है. बट लेट्स से वो बेस्ट रिलेशनशिप है, आपका लाइक बेस्ट फ्रेंड है एकदम, और कुछ बात हो गई, झगड़ा हो गया, और धीरे धीरे आप दूर होते गए, एंड फिर टाइम के साथ साथ से और दूर होते गए, और एक पॉइंट पे आप बात करना छोड़ देते हैं. तो ये सब चीजें होती है लाइफ में. इट्स नॉट अनयूजुअल, बट द मेन रीजन वाई रिलेशनशिप खराब होते हैं, इट्स नॉट जस्ट लाइक अ वन डे थिंग, इट्स नॉट जस्ट अ वन इवेंट थिंग. एक इवेंट में कोई भी ऐसा कुछ इवेंट होता है तो यू कैन फॉरगिव, बट इफ यू सी अ पैटर्न जहाँ पे बार बार आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार आपको हर्ट हो रहा है, then you slowly become emotionally distant. Okay, so that's how relationships can go sour. And this is one of the main area I think in this whole class which I want you all to understand. If it's not so relevant to you, it's okay, it's just good to know. But number one thing in relationship is this, to manage expectations. बहुत बार हम देखते हैं, मैंने तो बहुत बार देखा है कि जब एक्सपेक्टेशंस बराबर से हम मैनेज नहीं करते हैं, तब वो बहुत एक तरह से प्रॉब्लम हो जाता है रिलेशनशिप्स में, जिसमें मजा आता है फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, रिलेशंस के साथ मजा आता है, रिलेटिव्स के साथ. बट कभी कभी अगर हम ओवर एक्सपेक्ट कर लेते हैं, या सामने वाला ओवर एक्सपेक्ट कर लेता है, हम इतना नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर डिसअपॉइंटमेंट आता है, कहीं ना कहीं से फिर एक तरह का नेगेटिव फीलिंग आ जाते हैं, और रिलेशनशिप फिर इतने स्ट्रांग नहीं रहते जितने हो सकते हैं. ओके, so it's important to manage expectation. What I mean by manage expectation is just try to stop yourself from over expecting. जैसे मैंने बोला कि it's not like a science कि ठीक है आज मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कल मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, but it's mostly कि the less you expect from others, it's always better. क्योंकि अगर वो करा तो अच्छा है, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है. It's if you have little bit compassion, it's actually easy to not expect a lot out of people. Okay, you just think it in a positive way. Okay, ठीक है, कुछ हुआ होगा. Okay, so it's I'm just pointing out what are the things which can be a problem. And second is lack of communication. So many times communication जब नहीं होता है तब कहीं ना कहीं misunderstanding आ जाती है, और मिसअंडरस्टैंडिंग से ज्यादा जब दो लोग बात नहीं कर रहे हैं तो फिर उनका जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग नहीं रहता. Okay, so it's important to also add communication in a relationship. If there's not much communication, the bond gets weaker and weaker. Many times people take for granted, बहुत सारे लोग को granted ले लेते हैं, और फिर तब कहीं ना कहीं वो सामने वाले को बुरा लग सकता है, and the relationships can go bad. Then the ego clashes, very standard way, especially in young age. बहुत सारे ego clash होते हैं कि मैं ये बोल रहा हूँ, तुम ये बोल रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ, तुम ये कर रहे हो. And then people say, wait a minute, तुम बहुत अलग हो, मैं बहुत अलग हूँ, we both are not at all match for each other. And then they can part the way. Okay. And one more interesting way is, if you always, like for example, you like a person A, and you really like care for that person, you really, you know, are best friends, and you do a lot for that person, बहुत कुछ कर रहे हो, but almost सिर्फ आप ही कर रहे हो, वो person कुछ ज़्यादा respond नहीं कर रहा है. So it's a scenario where you like a person very much, but that person doesn't like you so much. So you keep doing, but after a point,
because we are all like pretty human, और we are all pretty एक तरह से बोल सकते हैं कि हम इतना कुछ ब्रॉड पर्सपेक्टिव नहीं है हर बार, तो एक पॉइंट के बाद कोई भी थक जाएगा और बोलेगा कि वेट अ मिनट, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं ही फोर्स कर रहा हूँ उसको, सामने वाले पर्सन को इतना इंटरेस्ट नहीं है, एंड slowly the relationship will get weaker and weaker. Okay, so this is just a very broad way how I have described कि relationships बैठ कैसे जाते हैं और relationships बनते कैसे हैं. तो ये दोनों प्रोसेस भी समझना अच्छा है, बट हमारा मेन पॉइंट क्या है आज का कि रिलेशनशिप्स में हमको कैसे रहना है, जब रिलेशनशिप्स है तब उसको कैसे रहना है या उसका पर्सपेक्टिव सही से समझना है. Okay, so first point is relationship with a family and relative. So this is like a core of a relationship which a person will have, especially throughout the life. This is what you cannot change. You cannot change your family, you cannot change your relations. More relatives can be added, but who are there, they cannot be subtracted. Okay, or family also, it's given to you. Okay, so these are like the core relationships of life. और बहुत बार मैं देखता हूँ जब यंगस्टर्स हैं तब वो इतने क्लोजली बॉन्ड नहीं हैं जितना हो सकते हैं, या फिर एक दो लोगों से बहुत क्लोजली बॉन्डेड है. सो when it comes to family, it's actually the core relationships, and not just for 1 or 2 days, it's for life. So it's something like it's almost like it's given to you, okay, and it's there for long time. So अगर वो है आपके पास और long time के लिए है, तो उसको कितने अच्छे वे में आप रह सकते हो वो बहुत important है, क्योंकि फ्रेंड्स को तो आप चेंज कर सकते हो. आप लेट्स से एक सिटी आपको पसंद है, सिटी चेंज कर लो. आपको एक कंट्री पसंद है, कंट्री चेंज कर लो. बट एक फैमिली पसंद है तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, राइट? यू आर पार्ट ऑफ इट, और इट्स important that you all can support each other. So family is very important, and relatives means I mean cousins here, because हम देखते हैं बहुत बार cousins के साथ ही grow करते हैं हम, और बुआ मतलब रिलेशन बहुत सारे लोग होते हैं, बट हम cousins के साथ ही ज्यादा grow करते हैं. तो ये फैमिली ऐसी है, दे नो यू इन डिफरेंट फेस ऑफ लाइफ. बहुत बार फ्रेंड्स जो है वो शायद इतना लॉन्ग टर्म आपको नहीं जाने जितना फैमिली आपको जानती है फ्रॉम द स्टार्ट. ओके, एंड दे कैन आल्सो रिलेट टू योर जर्नी. सो इफ लेट्स से आपको कुछ बहुत अच्छा अचीवमेंट आया है या फिर आपने बहुत स्ट्रगल किया है, दे नो यू मच बेटर, or they have seen you much better than other people. Okay, and this is strangely not very powerfully used. Okay, what happens is many times because of today's life, people keep moving here and there everywhere, so they're not so much closely bonded as they could be. Okay, so I just want you to know कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कोप है ग्रेट रिलेशनशिप. जैसे हम हमारे पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, दो चार भी क्यों ना हो, बट इफ यू आर क्लोज विद देम, we can associate with them for a long time. Okay, so this is one type of relationships. Other type of relationships is with teachers. Again, this is very special because teacher is a very unique relationship. Teacher student relationship is a very unique relationship, because one thing is जो टीचर है वो आपको कुछ दे रहा है, लाइक कुछ उनका नॉलेज दे रहा है, वो अच्छे तरीके से, वो बुरे तरीके से, जैसे भी नॉलेज दे रहा है. ओके, और टीचर बहुत बार फ्रेंड्स बनते हैं, बहुत बार ऐसे फैमिली से भी होते हैं, और बहुत बार जस्ट स्ट्रेंजर रहते हैं. बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जो बहुत अच्छे थे, जिनके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ पर्सनली. आई जस्ट नो कि वो अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा वो समझाते हैं, एंड दैट्स इट. वी डोंट हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप, बट स्टिल वी वैल्यू दैट टीचर अ लॉट. ओके, और बहुत तरह के डिफरेंट टीचर्स रहते हैं. कुछ लोग को बराबर समझाना नहीं आता है, कुछ लोग को बराबर बोलना नहीं आता है, या फिर कुछ लोग सब अच्छा समझाते हैं बट बहुत हाई लेवल से समझाते हैं. कुछ लोग बहुत अच्छा समझाते हैं, कुछ लोग अच्छा समझाते हैं, प्रेजेंट नहीं करते हैं. In practical ways, there are many type of teachers, but still all of them have their value. All of them, like we no need to take them personally कि वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं तो शायद अच्छे पर्सन नहीं है. Okay, and many times we see कि थोड़े शॉर्ट टेम्पर टीचर भी रहते हैं, तरह के टीचर रहते हैं. बट मेरा पॉइंट क्या है यहाँ पे मेन कि
हर टीचर का एक वैल्यू है, हर टीचर से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। जैसे यू कैन लर्न कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो लर्न वो क्या अच्छा नहीं कर रहे हैं, सो दैट यू ट्राई टू अवॉइड इट। ओके, एंड मेनी टाइम्स लाइफ में बहुत बार जब हम पढ़ना छोड़ देते हैं, जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तब हमें वैल्यू पड़ती है टीचर की। और मेरे को तो जब मैं पढ़ाना शुरू किया तब मुझे पता चला कि वाओ, इट्स सच अ बिग प्रोफेशन, या फिर इट्स सच अ satisfying thing to be able to teach somebody. Okay, so this is also one more type of relationship. मेरे पास अभी थोड़े ऐसे टीचर्स है जो फ्रेंड्स है मेरे अभी, राइट? वी आर नो मोर लाइक अ स्टूडेंट टीचर, वी आर मोस्टली लाइक अ फ्रेंड. Okay, and then next come is the friend relationship with friends. I think this is where is the core of relationships that we live in. ये core है, क्योंकि जितने अच्छे फ्रेंड्स हैं आपके पास, उतने अच्छे एक तरह से आपकी लाइफ रहेगी, उतना अच्छा आपका एक तरह का वे ऑफ लिविंग भी रहेगा. ओके, सो हु आर दिस फ्रेंड्स? फ्रेंड्स एक ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें हम चूज करते हैं, वी चूज देम. और बहुत बार ऐसे होता है कि दे आल्सो चूज अस, बट द पॉइंट इज वी हैव अ चॉइस हियर. ओके, हमें पसंद आ रहा है तो ही हम रहेंगे, पसंद नहीं आ रहा है तो हम रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है. Okay, we can easily go away, or we can also say ki, you know what, maybe we are not compatible with each other, but we have a choice here. Okay, so we choose them over some common point, कोई ना कोई common point से हम मिलते हैं या friends बनते हैं. But these are very very special people, because nowadays especially friends are almost equal to family now, because they are people who will not judge you, who will not um, they are people who will relate to you, who will help you, but yet they are a different track. They will not have like a common people whom they will talk to you about. Okay, so friends एक ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जिनके साथ बहुत एंजॉय कर सकते हैं, बहुत we can relate a lot of things with them. Okay, and many times friends knows more than family, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम फैमिली को नहीं बट फ्रेंड्स को बोल सकते हैं, उनके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अगर कंफर्टेबल नहीं है तो. So now friends are also very important. They are almost equivalent to family in today's days. Okay, and one very good thing about friends is it can easily cross gender, age. You don't have to be of same age also, you don't have to be of same gender also. You can be a totally different person who you are. मैं एक totally different person रह सकता हूँ, still we can be best of the friends. Okay, and now comes colleagues. There's one more thing which I think you should know as you start going in the corporate world, or soon you will go in colleges or even in the real world. It's important to know how to maintain rapport with colleagues. Colleagues मतलब हमारे साथ जो पढ़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उन लोग को हम colleagues बोलेंगे. वो हमारे friends नहीं है, बस हमारे जान पहचान के हैं, और हम उनके साथ कैसे डील करेंगे वो हम देखेंगे. Okay, so first thing is many times the professional relationship, it's not a personal relationship कि वो मेरा best friend है, good friend है, it's not necessary. It's just a professional relationship कि ठीक है, एक क्लास में हम दोनों हैं, एक प्रोजेक्ट में हम दोनों हैं तो हम दोनों काम कर रहे हैं, एक जॉब एक कंपनी में हम दोनों एक टीम में हैं तो हम दोनों काम कर रहे हैं, इस तरह का रिलेशनशिप है. And when it comes to job, just so that you know, it can be challenging sometimes, because everybody want to prove कि वो अच्छे हैं, वो talented है. So sometimes people can overstep on other people. Okay, so with colleagues this politics दिखता है, diplomacy दिखता है, तरह तरह की चीजें दिखती है. Just you should know it can be challenging sometimes, and it's a very competitive world. तो सपोज आपके क्लास में अगर 10 लोग हैं जिनको क्लास में फर्स्ट आना है, तो वो 10 के 10 लोग अभी अपना बेस्ट देंगे फर्स्ट आने के लिए. तो हो सकता है कभी कभी ऐसी चीजें हैं, ऐसे बुक्स है जो उनको पता है यहाँ पे अच्छा है, बट वो आपस में शेयर नहीं करेंगे until unless उसको कोई पूछे, और पूछे तो भी बोलेंगे नहीं मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी उनमें कंपटीशन आ गया है कि I want to beat the other person. Okay, so it can be competitive with colleagues, and many times different people from different background can be your colleagues. तो कभी कभी कल्चर समझने में, उनके तौर तरीके समझने में, उसमें थोड़ा बहुत इश्यूज आ सकता है. And then there's also working with, let's say, your managers or seniors. Now you're all pretty young for that. I don't think you're
looking for that, but there is a challenge. Suppose अगर आपके पास आप फर्स्ट ईयर में और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स है, वो आपको बोल रहे हैं उनके साथ आपको काम करना है, कोई टीम में काम करना है, प्रोजेक्ट में काम करना है, अगर कोई फेस्ट में काम करना है, तो समटाइम्स देखने आता है कि दे कैन बी बॉसी, दे कैन से नो नो यू डोंट टेल दिस, मैं जानता हूँ, इस तरह के. तो इट कैन बी अ चैलेंज, एंड मेनी टाइम्स colleagues can actually become friends. So best friends, some of my best friends are also my colleagues, and sometimes they can also become family, like so close, even beyond best friends. Okay, so that's another type of relationships I wanted to just give a brief idea about. But here comes the main key to everything, like all type of तरह तरह के रिलेशनशिप्स में मेन क्या है, दो तीन चीजें अगर हम नैरो डाउन करें, ऐसे तो बहुत सारी चीजें आती जाएगी, बट अगर दो तीन चीजें मेन नैरो डाउन करना है तो तीन चीजों पे हमें ज्यादा ध्यान देना है. फर्स्ट इज द गिविंग, सेकंड इज एक्सपेक्टेशन मैनेज करना, और थर्ड है ट्रस्ट. ये तीन चीजें अगर हम सही से देख पाए तो ऑलमोस्ट वी कैन बी एश्योर्ड कि मोस्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप्स विल बी वेरी पॉजिटिव, विल बी वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव, और ऐसे भी होगा कि आपको मजा आएगा फिर अपने रिलेशंस में. तो फर्स्ट क्या है, गिविंग. आई एम वेरी बिग ऑन गिविंग. I really personally love to be a giver, and there's simple reason for that, क्योंकि if you give, you are much under control कि कैसे सोचना है, क्या सोचना है, किस एटीट्यूड से देना है, किस तरह से हमें देना है. जैसे मैंने पूरा क्लास लिया कि कैसे देना है आपको, what is the correct way of giving. But if somebody else gives, so now you are not in control, because that person can think, वो अपने हिसाब से सोच सकता है, अपने अपने इसमें सोच सकता है. But if you give, you are in definitely control. And second thing is, the real joy is actually in giving. It's not so much in taking, it's in giving. So in any relationship, if you try to give more, that is the number one thing which will help the relationship sustain. रिलेशनशिप को अच्छे से बैलेंस करेगा. तो बस एक इशू क्या है गिविंग में, अगर हम बराबर से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि देना कैसे है कुछ भी चीज को, हाउ टू यू नो, लेट्स से आप किसी का ध्यान रख रहे हो तो भी कैसे ध्यान रख रहे हो, यू आर केयरिंग फॉर समबडी, बट कैसे, अगर आप उसको जता जता के कर रहे हो, या फिर आप उसको ग्रो नहीं करने दे रहे हो, तो वो पर्सन सफोकेट हो जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, राइट. सो केयर करना है तो भी उसका एक तरीका है, आपको किसी को समझाना है तो भी उसका एक तरीका है. सो ट्राई टू डू इट एज मच एज यू कैन. बट हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत लोग अच्छे से अगर नहीं समझा रहे हैं, अच्छे से अगर नहीं हमारा केयर एक्सप्रेस कर रहे हैं, अच्छे से उनके मन की बात एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, then it can complicate thing. Okay, intention is good, but it can complicate. So number one thing is to give, learn to give properly, whatever it is. If you're giving somebody advice, if you're giving somebody some skills, or if you're just sharing light moments also, jokes bhi kar rahe to try to give it in a proper way. And I took a whole class on this, so I don't want to go much deeper in right now, but I think you all will know what I mean by that. Second is manage expectations in relationships. This is actually number one biggest problem in relationships that I have seen, that I have faced, and that's an expectations. बहुत बार बहुत लोग बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं हमसे, इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है. बहुत बार हम बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं जो सामने वाले फुलफिल नहीं कर सकते हैं. तो ये जो पुल एंड पुश का गेम है, इसमें बहुत बार देखते हैं कि रिलेशनशिप्स में कभी इश्यूज आ सकते हैं. एंड इट्स एन ऑनगोइंग थिंग. ऐसा नहीं है कि आज एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा और बस हो गया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ किसी से. ऐसे नहीं होता है. वी आर ऑलवेज ग्रोइंग. सो द बिगेस्ट थिंग इज हाउ टू मैनेज इट प्रॉपरली, राइट. एंड like I said, first thing is, if you can, avoid expecting big things from people, because one thing is, when you start expecting a lot from others, other people, सामने वाला थोड़ा प्रेशर में आ जाता है कि उसको फुलफिल करना है वो. And second thing is, if they don't fulfill, you will feel disappointed, you will feel dejected, or you will feel let down. Okay, so we don't want all those things. We want to be pretty balanced. हमें लाइफ में जितना हो सकते उतना हैप्पी रहना है. So we don't want unnecessary things. So try to avoid it as much as you can. Okay,
एक्सपेक्ट किसी से मत करो, मतलब ऐसा मतलब नहीं है कि वो कुछ भी करे तो ओके, इट जस्ट मीन्स कि यू आर नॉट टाइड कि वो ऐसा करेगा ही करेगा, वो मेरे लिए करना ही चाहिए, मैंने उसके लिए 2 दिन बिगाड़े, वो मेरे लिए 1 दिन ये नहीं कर सकता है क्या, इस तरह के आप अगर आप सोचोगे तो जल्दी वो रिलेशनशिप ज्यादा सस्टेन नहीं होगा. ओके, सो माय फॉर्मूला फॉर रिलैक्स लाइफ इज दिस: you just give whenever you can give, you give good things, and then when it comes to expecting, try to expect as little as you can. Okay, if there's no way to do no expectations, if that's hard, that's fine. हो सके जितना आप कम करो, उसको मैनेज करो, तो ऑटोमेटिकली यू विल सी योर लाइफ विल गेट रिलैक्स्ड, unnecessary stress, unnecessary complications नहीं आएंगे. Okay, and the third and the most biggest factor in sustaining relationship is trust. Everything can go and come back, but if you break trust, or if the trust is not there, it's gone, relationship is gone, very soon it will be gone. Okay, till जब तक भरोसा है, जब तक ट्रस्ट है, जब तक आपको एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट रहता है, तब तक वो रिलेशनशिप को कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अप एंड डाउन आते रहेंगे, गलतियां होती रहेगी, यू नो, इश्यूज आएंगे, कुछ भी हो जाएगा, बट ट्रस्ट है जब तक कुछ नहीं होगा रिलेशनशिप को. बट जिस दिन ट्रस्ट चला गया, तो उस दिन से उसके अंदर का बेस चला गया, तो फिर बाकी सब चीजें अच्छी है तो भी वो सुपरफिशियल रहेगी. ओके, so it's important to understand the concept of trust. So very very valuable concept, because जितने भी लोग जो अच्छा प्रोग्रेस करते हैं, they all understand only people who are trustworthy will move ahead in life. If your team doesn't trust you, you will not be able to lead them. If a teacher, if the student doesn't trust the teacher, teacher cannot teach, student will not get anything. If people don't trust you, they will not listen to you, और वो आपकी बात नहीं सुनेंगे या आपको आपके मैसेज पे ध्यान नहीं देंगे, right? So trust is a very 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 valuable concept, or it's a very valuable thing to have. So the more trustworthy you become, the more people can depend on you, people can rely on you, people can listen to you. The more you become like that, the more you can move ahead in life, not just relationships. I think it's very important कि आप trustworthy बनो, right? So trustworthy बनना मतलब कुछ बहुत complex चीज नहीं है. It's just that you are a man of, you are a person of integrity. तो जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसको ही आप बोल रहे हो, इस तरह के अगर आप ऑनेस्ट रहोगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपको ट्रस्ट करेंगे, राइट? तो एक बार लोग आपको ट्रस्ट करेंगे तो फिर उसको जल्दी से तोड़ना भी मुश्किल है, मोस्टली लोग ट्रस्ट करेंगे. बट सपोज बाय एनी चांस ट्रस्ट वो टूट गया, तो फिर आपको वापस उसको रीगेन करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. ओके, so sometimes we break trust, sometimes other people break trust. It's all part of the journey, but I'm just telling you कि the more trustworthy you are, the more you will move ahead in life. Many times हम देखते हैं कि टैलेंट, एक किसी का स्किल लेवल, वो सब मैटर नहीं करता है. अगर हम किसी पर्सन पे ट्रस्ट करते हैं तो वो कम टैलेंटेड है तो भी हम उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, या फिर हम उस पर रिलाई कर पाएंगे कि कोई नहीं, ये देख लेगा. Okay, so it's very very important, and it's a very important concept in a relationship also. Okay, so now we saw in a very very overview कि क्या क्या है concepts एक relationship को sustain करने में, तरह तरह के relationships के बारे में. But now there's also one point of view, yeah, there's also one aspect which we should talk about, and that is how to deal with negative people or negative relationships. My life में ये आते रहते हैं, right? और बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत लोग नेगेटिव लोग या नेगेटिव रिलेशंस या नेगेटिव चीजें हमें बॉदर कर सकती है. ओके, सो द थिंग अबाउट दैट इज इट कैन टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी आपकी एनर्जी ले लेगा, आपका टाइम ले लेगा. जैसे एक सर्वे के हिसाब से तो हम जिसको लव करते हैं उसको हम अगर 1 घंटा याद करेंगे, तो जिसको हेट करते हैं उसको 10 घंटे याद करेंगे. मीन्स वी थिंक 10 times about people we don't like. That is very funny, but it is true. And we find it all around us. Negative people मतलब क्या है, एक ऐसा नहीं है कि हमसे वो
डिसएग्री कर रहे हैं तो वो नेगेटिव हो गए, हम ए बोल रहे हैं वो बी बोल रहे हैं तो वो नेगेटिव हो गए, ऐसा नहीं है। नेगेटिव पीपल मीन्स पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग फॉल्ट्स, आप ये कर रहे हो, ये नहीं, ऐसे करो वैसे करो, या पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली talking about things which are not well rather than talking about things which are good. They focus like it's a glass full, half glass full concept, जहाँ पे आधी glass full है या आधी empty है, तो पॉजिटिव पर्सन बोलेगा आधी फुल है, नेगेटिव पर्सन बोलेगा आधी एम्प्टी है, राइट? तो रियलिस्टिक बोलेगा कि आधी फुल आधी एम्प्टी दोनों है, बट माय पॉइंट इज कि they always focus on things which are not well, they are always focus on things, focusing on things which you can do better, focusing on things, only focusing on things which is wrong. टीचर है, एक टीचर पढ़ा रहा है और बहुत अच्छा पढ़ा रहा है और बहुत इम्पोर्टेंट वे में अच्छे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा है, एक बहुत टफ सब्जेक्ट को वो अच्छे से पढ़ा रहा है, बट किसी को देखना है तो वो बोलेगा कि टीचर तो बड़ा अजीब दिखता है, इसके तो मुझे इंग्लिश ही समझ नहीं आती है, कहाँ से सीख सकते हैं, राइट? सो इट्स जस्ट लुकिंग फॉर थिंग्स व्हिच आर नॉट गुड. सो सच पीपल एग्जिस्ट, such people are there, will always be there, and number one thing to understand is, and they'll be in our known people, they can be in our friends, it can be relatives, anybody, even anywhere we can find such people. In fact, even news I consider a kind of a very negative thing, because mostly उसमें क्या अच्छा नहीं है वही सब आता है, क्या क्या अच्छी चीजें वो सब के बारे में तो ज्यादा आता ही नहीं है. But these are some of the ways how to deal with negative people, because if you don't deal with them, almost you can be assured कि you will be very lost, or you can be very disturbed by them. Okay, so number one strategy is, first, you don't be them. Don't be one of the negative person. Okay, if you can take away something from this class, just take away this one point. Don't be one of those negative people who are always criticizing or always looking for something which is not good. आप यही देख रहे हो कि क्या अच्छा नहीं है, क्या बुरा है, क्या और ऐसे हो गया वैसे हो गया, उस तरह के नंबर वन पहले आप मत बनो, क्योंकि if you do that, people will start avoiding you. And second thing is, it's a very sad way of living your life. Okay, so don't be among them. Second thing is, okay, you face some people who are constantly criticizing you, constantly putting you down, or anything, right? Whatever it is, if they are doing this, number one is to avoid. If you can avoid some people, like if they are like people who you can avoid them, just try to avoid them. Like don't try to be very constantly in touch with them. If you can avoid them. Second thing is, people whom you cannot avoid, आप avoid नहीं कर सकते हो क्योंकि अब कॉमन क्लास में है, क्लास में वो साथ ही बैठते हैं, या फिर कॉन्स्टेंटली वो इतने पास है कि वो आपसे मतलब मिलते रहते हैं. Then you explain them, tell them, you know, this is not good, you don't like it, and try to be reasonably in your explanation. Don't force them, but tell them, look, this is not good, you're not enjoying it, you're not liking it. Explain to them. Even if they harass you, even if they say you, no, this is, you are like this and बहुत ज़्यादा harass कर दें, then you report them. You are not alone, so you report them to your हायर अथॉरिटीज. फैमिलीज में बोल सकते हैं, आप टीचर्स को बोल सकते हो, कहीं पे भी आप रिपोर्ट कर सकते हो कि आई एम हैविंग सम इशू. डोंट लिव विद एन इशू. आई हैव सीन पीपल हु यूज्ड टू गेट सो लाइक उनका कॉन्फिडेंस इतना कम हो जाता है, बाकी लोग उनका इतना मजाक उड़ाते हैं या फिर बाकी लोग उनको इतना नेगेटिवली बोलते हैं, तो बट वो कुछ भी नहीं करते थे. they would just take it all in and they would feel bad. Okay, so don't be like that. Report अगर आपको कुछ issue है तो. And beyond that, if you have to fight, sometimes you have to fight. Fight meaning not physical fight, maybe physical fight also, I don't know, but fight meaning if somebody is trying to dominate you, somebody is trying to put their views on you, you can fight and say, wait a minute, you can do the way you want, I will like to do the way I want. Okay, so in that way, if you take a stand, people will stop bothering you so much. Okay, or they will not bother you as much as they used to. Okay, so sometimes you have to take a fight and just understand in a grand context of things. अगर बड़ी स्कीम में अब देखोगे तो बहुत बार हम अकेले नहीं है, जितना हम सोचते हैं उतने हम अकेले नहीं हैं.
So we can always reach out for help if needed. And if you don't have any help, then you try to do all these things. You fight it out, you avoid, you just explain. And if not, always remember that the best strategy is to go away from as much as you can, right? If you feel the person is not able to change, then you have to do something about it. You cannot let it damage yourself. Okay, I've seen my friends, some of my friends do this. That's why I thought it's important, because it can take time to come up again then. Okay, so it's also important कि इस तरह के लोग हैं, इस तरह की situations होती हैं, और it's all right. It's not that कि मेरे साथ ही ये हो रहा है, मेरे साथ ही ये सब हो रहा है. सबके साथ होता है. When I was studying, some people used to even like make fun of me, which I didn't like, but they used to make fun of me. So I also had to deal with that, right? So it happens. Finally, I would just like to conclude this class with few things, and I think we have maybe 5 minutes, so I don't want to overdo this. But one thing is self-talk. I have seen personally, जो लोग अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, या अपने बारे में उनका हाई ओपिनियन है, या फिर जो अपने आप में एक तरह का प्राउड फीलिंग रखते हैं कि who you are, and somebody who is positive attitude, how they talk to themselves, इस तरह के लोग को बाहर के रिलेशनशिप्स में बहुत आसानी होती है. They will have no problem, not much problem talking to people, getting along in good relationships, or even making friends, new friends. ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. लेकिन जो लोग अपने आप के बारे में हाई ओपिनियन नहीं रखते हैं, या फिर सेल्फ के बारे में ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहते हैं, उन लोग को बहुत बार देखता हूँ कि बहुत चैलेंजिंग आता है. क्यों? क्योंकि वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, तो बाहर के रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करता है. ओके, सो द नंबर वन थिंग इज टू develop yourself. If you can, automatically it will be spread outside, automatically बाहर दिखने लग जाएगा. Okay, and I think one important thing I want to say is people will make exception for you if they like you. Very important concept, very very important. I think in this slide this is the second important concept. If people like you, अगर वो आपको पसंद करते हैं, वो आपके लिए exceptions निकालेंगे, कोई डाउट ही नहीं इसमें. कहीं पे भी, क्लास में हो, वर्क प्लेस में हो, लाइफ में हो, फैमिली में हो, कहीं पे भी हो, इफ दे लाइक यू, they will make exception for you. Okay,